Hello dear students, welcome to Akhil English classes. In this video, we are going to study a motivational poem, The Noble Nature, written by Ben Jonson. The Noble Nature is a short poem composed by Ben Jonson. ये एक छोटी कविता है जो कि प्रसिद्ध कवि बेन जॉनसन द्वारा लिखी गई है. थीम ऑफ द पोएम. द पोएट सेज दैट noble nature and good deeds are a man make him great, not a long life span. अर्थात कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति का उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ कर्म ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं, न कि उसका लंबा जीवन. डियर स्टूडेंट्स, पोएट बेन जॉनसन इस मैसेज को आप तक पहुंचाने के लिए इस कविता की रचना की है. इस पोएम का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखेंगे, प्रत्येक वर्ड की एक्सप्लेनेशन करेंगे और उससे भी पहले अब हम करेंगे इस पोएम का रिसाइटेशन, वाचन. हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रिसाइट द पोएम. द नोबल नेचर. It is not growing like a tree, in bulk doth make man better be, or standing long as an oak, 300 year, to fall a log at last, dry, bare, and sere. A lily of a day is fair far in May, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light. In small proportions we just beauties see, and in short measures life may perfect be. Dear students, इसके रिसाइटेशन के पश्चात हम इसका वर्ड टू वर्ड जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग देखेंगे और उसके पश्चात इसकी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे. वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल स्टडी पार्ट सेकेंड, द नोबल नेचर, एक्सप्लेनेशन एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग. डियर, सब्सक्राइब द चैनल. यदि अच्छा लगा हो तो like and share to your friends and relatives.